Hello. So if Bank Nifty comes to VWAP by next candle or by this candle around say around 410 levels, I'll look for a scalp buy in Bank Nifty for a new high. Not this high, this high. Yeah. So new high is 33,600, and my stop loss will be day low. And one more trade in Bank Nifty would be I will look for a sell or a buy above or below 215 candle. Once 215 candle closes, if 215 high breaks, I'll buy. Stop loss will be low, 215 low, and if 215 low breaks, I'll look for a sell. Stop loss will be 215 high. Not trading Nifty, not trading Reliance today. Thank you. मैं आज बैंक निफ्टी में स्कैल्प बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ. अगर बैंक निफ्टी अगर 411 410 लेवल जाती है इस कैंडल पे या अगले कैंडल पे, तो मैं स्कैल्प बाय करूँगा. स्टॉप लॉस रहेगा डे लो, टारगेट रहेगा डे हाई, और एक और ट्रेड रहेगा वो रहेगा 215 के ऊपर या 215 के नीचे. जो भी कैंडल टूटा उसका मैं स्टॉप लॉस रखा दूँगा और बाय और सेल करूँगा. थैंक यू.